अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी नौजवान के साथ मैं हूँ अज़रा आलम। ज़ुबानें सीखना और सिखाना ज़हनी परवरिश और इंसानी तरक्की की निशानी करार दी जाती है। साथ साथ हिजरत भी इंसानी तरक्की का ज़ामन करार दी जाती है। ज़ुबानों से वाबस्ता आज जी नौजवान का हिस्सा बनी है महरोश अज़ीम। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महरोश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच अज़रा फॉर कॉलिंग मी ओवर टुडे। वेलकम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी अपने नाजरीन को कि मिस महरोश अज़ीम मेरी टीचर भी रह चुकी है और मैंने नबल में इनसे इंग्लिश वर्क से एक प्रोग्राम था वो किया था। उससे पहले एयर यूनिवर्सिटी पे भी मैंने इनसे एक वर्कशॉप ली थी। चलें इनसे बात करते हैं आज के हवाले से। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप पढ़ाने के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, तो इसी को क्यों इंतखाब किया और इसमें लैंग्वेजेस ही क्यों? ओके, वेल दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड मुझे खुशी है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम समबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी. And if I talk about literature and language, so specifically, that was not my decision. After my once I did my intermediate, I had the same kind of concept. कि अच्छा ठीक है मैंने इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है. ज़्यादातर हमारे साइड पे यही होता है कि पेरेंट्स कहते हैं या बच्चा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने. So चूँकि I am the youngest one in my family, तो I had the same kind of concept because my elder brothers and sisters they were in the field of medical, in the field of engineering. लेकिन I remembered once I did my FSC, at that time I had no idea what literature is basically. Then my parents asked me to choose this subject. ठीक है, like आपने अपने फादर के कहने पे ये ओके. लेकिन I am very happy that I have chosen this subject. The reason is that with the passage of time I realized one thing, that the kind of a connection I used to have with nature and the way I used to observe people in society, this was one of the best decisions I have ever made in my life. The reason is language really has a very close relationship with the behaviors of people and how do people communicate with each other. And one surprising fact about my life is that I was not a very communicative person in my school and college. And I used to take a bit long time to communicate and express my emotions and feelings. So I believe whatever you feel during your childhood that it's a shortcoming for you, there comes a point कि वही चीज़ आपकी strength भी बन जाती है. So nowadays I am teaching communication skills and English language courses, and I'm so happy that I have made my career in the same field, and I'm looking forward to explore more in the same field. I think this is something common कि मेरा भी ये इशू है कि मैं अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकती किसी को कम्युनिकेशन के मामले में, थोड़ा सा इंट्रोस्ट्रक्टिव. आप एक इंस्टीट्यूट भी चला रही हैं, उसके हवाले से बताइएगा. उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स या टेस्ट करवाए जाते हैं? ठीक है, इंस्टीट्यूट इज बेसिकली नेम्ड विद लिंगवा क्लब. लिंगवा मीन लैंग्वेज. पर्टिकुलरली वी आर डीलिंग विद ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज. और उस इंस्टीट्यूट में जो हम ऑफर करें कोर्सेज वो कोर्सेज हैं जिनको फॉर एग्जांपल इफ समबडी वांट्स टू गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन टू डिफरेंट कंट्रीज, फॉर एग्जांपल UK, US और Canada, so there are the different proficiency exams, for example IELTS, PTE, TOEFL exam, Duolingo exam, language cert. So we do offer the classes for all of these language tests. Plus, we do have a course of communication skills that we are offering particularly for those people who are facing different kind of challenges at their workplace. Even if they are the university students and they are facing challenges in terms of presentation skills or the public speaking skills, we do provide them such kind of fully equipped courses which can help them to be a good communicator in their relative fields. इसके साथ साथ आप आई थिंक किसी दो रेस्टोरेंट में आई थिंक उनके स्टाफ को कम्युनिकेशन स्किल्स की. There are the few corporate fields or the sectors there are the few corporate sectors. For example, the restaurants, one of the renowned restaurant of Islamabad, we call it Basha Istanbul. बिल्कुल. And in F7. Yes, in F7, and we do provide services of customer service and the communication skills, which is becoming a kind of you can say hype in today's age, because we know that everybody is moving towards the business field, whatever the field is. You have to market that thing. So for that, it's important to have a good relationship with your clients and customers. So this is something that we are offering, and these are the services that we are particularly offering in our institute. पाकिस्तान से बाहर लड़कियां बहुत कम जाती हैं, इसमें क्या सहूलियात की कमी की वजह है या देखने में आता है कि जब लड़के ज़्यादा जा रहे हैं बाहर, इसकी क्या वजह है? अगेन ये वो सवाल है जो मुझसे अक्सर लोग बड़ा काइंड ऑफ
you can say surprise me, or might be sometimes to irritate me. They usually ask this question that whenever we see your classes, there are the more boys than females. So what is the reason behind that? So इसका जो सबसे logical answer I would say is कि we know that when we talk about study abroad, that means if somebody is going on self-finance, that person has to invest a lot of money. Exactly. तो generally हमारी एक society में concept है कि अगर पैसे खर्च करने ही हैं तो why not on a male member of the society, क्योंकि that person is going to take the responsibility of the family by the end of the day. So this is the concept, but still we know that we are moving towards modernism. We have accepted this thing that females are equally important and they can also make their career, they can also support their family members as well. But still somehow I believe that in our country, like if we talk about the side areas or the small cities, people have this concept that if we really want to invest a large amount, we will invest on males rather than females. Exactly. So this is one of the biggest reasons that females are less in number than boys. बैरूने मुल्क जाने वाले अक्सर लोग टेस्ट के नाम पे फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं. इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि अगर कोई टेस्ट दे रहा है तो उसको उसमें क्या क्या देखना चाहिए? ठीक है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम गोइंग ऑन. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उस फ्रॉड का निशाना बन के दूसरे मुल्क पहुंच भी जाते हैं. एंड देन दे रियलाइज दैट दे हैव मेड like kind of a bad decision as well. And again they started talking about the consultants and all that. When I started off my career, luckily I would say that I started my career with the very fine universities जहाँ के students बहुत अच्छे and बड़े intelligent थे. तो I used to have this concept in my mind कि आज की youth बड़ी तेज़ हो गई है. They are not going to be the part of such kind of you can say fraud and as, like, but still I know that there is a large population based in Islamabad, Lahore and Karachi जो लोग ऐसे consultants के हत्थे चढ़ जाते हैं और उसके बाद में ये होता है कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, like having the very wrong information about the universities as well, about the finances as well. और जब वो दूसरी कंट्री में जाते हैं तो it becomes very difficult for them to arrange their fee structure and all that. Same goes for the career counseling as well. Study abroad mean it has a very direct relationship with the career counseling. आप एक दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए जो आपको फर्दर लॉन्गर रन के लिए हेल्प करेगा. तो बेसिक होता ये है कि कंसल्टेंट्स आपको फोकस इस बात पे कर रहे होते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी में जाएं जिनके साथ उनका एक डायरेक्ट कनेक्शन हो एंड दे कैन अर्न मोर मनी. तो उस केस में बच्चा काइंड ऑफ अ सफ़र होता है क्योंकि जब वो वहाँ पे जाता है तो ही गेट टू नो इवन इफ़ दे हैव डन लाइक इफ़ दे आर डन विद देयर डिग्रीज ओवर देयर, दे गेट टू नो कि उस डिग्री का वहाँ पे स्कोप ही नहीं था. And I have seen so many people going there and then coming back as well. The reason is that they are not able to get any degree relevant to their job. हमारी इसमें कोई there is nothing wrong to say that over 95% population who is going abroad, they are doing odd jobs. Exactly. Very few people are there who are done with their bachelor's degrees and the master's degrees and they are doing the jobs relevant to their fields. And the reason is that because they never get proper counseling. So I believe this is something that people should look into it, and we should have such kind of awareness programs where we can tell young generation that how they can get rid of such kind of scams and the frauds. अच्छा, एक चीज़ पाकिस्तान में बहुत देखने को मिलती है कि एजुकेशन के ऊपर बहुत कम खर्च किया जा रहा है. आम अल्फाज में एक स्टूडेंट थे, आई थिंक उन्होंने कोई चावल के रिलेटेड कोई चीज़ बनाई थी. उन्होंने वो अपने टीचर से शेयर किया, लाइक उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया. उनके टीचर्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, लेकिन जब उसको थोड़ा हायर लेवल पे लेके गए हैं ताकि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको बजट चाहिए था. लेकिन जो बड़े बैठे हुए थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इतना बजट ही नहीं है. उन्होंने अप्लाई कर दिया जर्मनी में एक स्कॉलरशिप पे. उन्होंने तो उनको हाथों हाथ ले लिया. तो इस हवाले से क्या कहती हैं आप? देखें, अब ठीक है वो चला गया जर्मनी, अब वो जर्मनी को ही सर्व करेगा, अब वो पाकिस्तान नहीं आएगा. तो इसमें किसका फेलियर है? Failure is all about I think society, individuals, government, everyone. और इसी ही वजह से मेरे हाल में जो हमारी यूथ बहुत ज़्यादा मुल्क से बाहर जा रही है. एक तो हमें we know that we do have political instability, we do have economical instability as well, and people know that it's very hard for them to have a very good lifestyle in Pakistan. लेकिन education system matters a lot. Exactly. अब चूँकि हम
टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए हैं, सोशल मीडिया की तरफ आ गए हैं, तो लोगों को अवेयरनेस भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है. और जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, वी नो दैट पीपल आर वेरी टैलेंटेड, बट व्हेन दे डोंट गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़ दे गो अब्रॉड. एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रेन ड्रेन एज वेल, कि आपकी जितनी बेहतरीन लाइक टैलेंटेड यूथ है वो जा रही है दूसरे कंट्रीज़ में. एंड फेलियर, आई वुड से दैट समटाइम्स इट हैपन्स that if we talk about the university system, that for example professors and all that, most of the time I have seen that हमारे प्रोफेसर्स के हाथों में भी कुछ नहीं होता. एग्जैक्टली. ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपने बहुत सारे प्रोफेसर से जब बात, हमारा कोई प्रोफेसर हमें फंडिंग नहीं दे सकता. क्योंकि उसके पास ये राइट ही नहीं है HEC की तरफ से. जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं मास्टर्स एंड PhD में. उसकी रीज़न यही है कि उनको एक प्रॉपर फंडिंग दी जा रही है. So in that case, I believe overall we need to look into all these things. How can we change the education system? And all those people who have moved abroad for the higher education, they have got the quality education. I believe they should also take the responsibility and come back and work for the nation as well. Exactly. And I hope and I pray that in future we will have a good education system. Inshallah. What are your thoughts about women empowerment? Women empowerment, I believe if you want your society to grow rapidly, women empowerment is the only thing that can help you out. So taking men and women on the same board and taking the help from the women on the same scale, that you know that both of them are going to play a huge role to fabricate a good society. So in that case, women empowerment को बहुत गलत रंग भी वैसे दे दिया गया है. Exactly. We have like very different sort of definitions for the women empowerment and feminism, but I believe that women are empowered from the very first day, and because they have the different roles, they have been doing different roles in the society. Exactly. And that has made us different in society as well. And it's not about only, like there was the time that people used to associate the role of women only with home chores, or might be related to like homemaking. But there's no doubt in it that we have seen women being excelling in different careers, like in education system. And if I talk, because I am like right now I am working as an employer, so I have seen that if I have to hire someone, I always try to prefer to hire someone who is female, because I believe they are more hardworking, dedicated. Exactly. They have good time management as well, so why not? So in terms of qualities, they both have the good qualities, men and women, we can't differentiate that one. But women in Pakistan especially have taken a lead, and everybody is witness of that thing. Thank you so much. At last, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जनरेशन को और हमारी यंग गर्ल्स को? Okay, young girls, like if I have to recall myself when I was in my extreme young age of 21 or 22 years old, I remember that at that time I was having the same kind of insecurities the way I can see my students to have. So the only one message I really want to convey is never ever let any barrier or anyone to not fulfill your dreams. And whatever the society is telling you in terms of your gender role, or in terms of your like goals or anything, you should not listen to that one. Just listen to your hearts. If you want to be a good homemaker, go and make yourself, promote yourself in that way. If you really want to excel in any career, go and do that one. Whatever you want to do, always follow your heart. But again, you should be very vigilant about it, what is right and what is wrong for you. Because the decisions that you make in your early 20s, that basically matters a lot in your career growth. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जी तो नाज़रीन, ये थी आज की किस्त. हमारे साथ मौजूद थी मिस महरोश अज़ीम. आपने जाना कि लैंग्वेजेस कितना अहम किरदार अदा करती हैं हमारी लाइफ में. फॉर एग्जांपल, आप मूव भी करना चाह रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती होगी तो आप वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकेंगे. इसलिए, और ये कहा भी जाता है कि जो इंसान 2 या 3 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानता है, उनका IQ लेवल बहुत ही हाई होता है. तो आज के लिए इतना ही. अगली किस्त में एक नए बासलाहियत नौजवान के साथ फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.